से बढ़कर 2011 में 65 मिलियन हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं और भी बढ़ गई है। इस समस्या का हल कि मोदी सरकार ने जो दिल्ली में काम किए, अध्यक्ष जी, सस्ता शहरी और आवास खासकर कि सारी अनाधिकृत कॉलोनियों में जो काम किए, ये बहुत ही अभूतपूर्व है। सबसे पहले मैं बात करूं, जब भी शहरी घरों की मांग बढ़ती है तो उसे औपचारिक क्षेत्र के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। इससे बढ़ती जनसंख्या को झुग्गी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर द्वारा अपनी आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहले की सरकारें शहरी गरीब झुग्गीवासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना में शामिल करने में विफल हो गई है। इससे उनके जीवन स्तर में कई सुधार। बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। दरअसल ये विधेयक केंद्रीय मंत्री जो पार्टी तय करेगी, अभी बड़ी मेहनत करके ये विधेयक लाया हुआ है और एक साथ 3 साल का विस्तार देना बड़ी राहत है। उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दंडात्मक कार्यवाही के विरुद्ध संपत्तियों को सुरक्षित करने में संवेदनशीलता का परिचय दिया है। व्यापारी संगठन लंबे समय से केंद्र सरकार को इसकी मांग कर रहे थे। अध्यक्ष जी, ये विधेयक शहर में किसी भी कार्रवाई से उस समय तक जब तक सरकार दिल्ली मास्टर प्लान लेकर आएगी, जिसमें झुग्गियां, अनधिकृत कॉलोनियां, फार्म हाउस, गांव के आबादी क्षेत्र और अन्य मौजूदा भूमि नीति और विनियम कमजोरियों की व्यवस्था के लिए एक रोड मैप देने की व्यवस्था करेगा। मैं माननीय मंत्री जी से दिल्ली के लिए मास्टर प्लान को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप देने का अनुरोध करता हूं, जिसमें झुग्गी झोपड़ियां, क्लस्टर, अनधिकृत कॉलोनियां जैसे अनधिकृत विकास को रोकने के लिए उपाय किए गए वगैरह। मुझे उम्मीद है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में दिल्ली के लिए मास्टर प्लान जल्द ही तैयार हो जाएगा, जिससे दिल्ली के विकास की रफ्तार तेज होगी और एक दिल्ली के एक विश्वस्तरीय शहर बनेगा। अध्यक्ष जी, विदेश घुसपैठी या झुग्गी झोपड़ी समस्याओं की एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का निदान पाने के लिए विदेशी घुसपैठियों की शिनाख्त करना भी बहुत जरूरी है। आज सभी बड़े शहरों में विदेशी घुसपैठियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और झुग्गी झोपड़ियों की गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बन रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी। Sabhapati Mahoday, I would like to start by thanking the honourable members who have spoken, Ramesh Biduri ji, Parvesh Verma ji, Rahul Sewale ji. Whilst lending their support to the bill that is before us, they have also made some suggestions. Many of these suggestions are already under consideration. Given the limitations of time, I will respond to the suggestions I've heard, and I would also, Mr. Chairman, sir, like to share through you with the honourable members my expectation of how the master plan, which as I said is at the stage of finalization, how that will affect not only those who are living in this so-called unauthorized colonies, for which we have already provided Malikana Haq, how we propose to take that forward. Also, Jahan Juggi Wahi Makan scheme, land pooling, which has been referred to by several members, and what has perhaps not been referred to specifically by members, honourable members, but I think which is at the back of everyone's mind, urban regeneration of old development colonies, because I think this is part of the largest thing. Sir, if today the population, when the census comes, is in the vicinity between 2 and 2.5 crores, my reading, sir, based on my experience of the last 6.5 years that I have been associated with the Ministry of Housing and Urban Affairs and with issues relating to the development
of Delhi, a city in which I was born, in which I grew up, a city which is rapidly changing. Sir, out of this population of between 2 and 2.5 crores, I believe, sir, 40 lakh people will benefit from the Malikana Haq, the authorization of or dealing with unauthorized colonies. There are still some sections which were not covered in the original list, but which we had promised to sequentially take up after this process is complete. About 40 lakh there, sir. Jahan Jugi, Wahi Makan, another 10 lakh of our citizens, that makes it 50 lakh, sir. And land pooling, sir, when finalized, I think will cover something like 20,000 hectares in 138 sectors. Another 70 lakh people, I think, will benefit from that land pooling, which makes it 50 plus 70, 1 crore 20, and the other colonies which are due for redevelopment. So Delhi is not only a city which is growing in population, it's growing in economic strength, but it is also virtually being rebuilt, sir. Sir, my previous generation came here after 1947. They did the initial building. Today, the new parliament that we have the privilege of being in, the Central Vista, Bharat Mandapam, Yasho Bhumi, and if you see all around, there's redevelopment taking place at a massive scale. Sir, my colleague and friend Ramesh Biduri ji wanted the cutoff date raised from 2014 to 2022, if I heard him correctly. I would just like to tell him that this bill specifically seeks extension for the next 3 years. This extension will give us the cushion, the time cushion, and the flexibility to have wide-ranging consultations on policy matters and guidelines for orderly development of the unauthorized colonies. I think my answer should encompass and is intended to encompass specific suggestions which have been made. Sir, Shri Parvesh Sahib Singh Verma ji mentioned the MPD 41. I have already taken the liberty of, in anticipation of saying something. As I mentioned earlier, sir, he said that GD and land pooling policy, I have already responded to that. The master plan is at a final stage of, I would say, consultation. It's way beyond that. I think it's at a stage of finalization now. And this policy, we have made a lot of progress in formulating this policy, and we will see that substantial benefits, I'm choosing my words carefully, sir, substantial benefits will accrue to the citizens of Delhi, all the stakeholders, those who are there, the Kisan Bhais who own the land, and all the others. We are now getting a more flexible approach to pooling so that little technicalities don't stand in the way, sir. Sir, I would once again thank my 3 colleagues who have spoken and all the others who will give support to this absolutely vital piece of legislation, because it will give us an opportunity to ensure that processes which were started 20, 30 years ago, and in 2006 in particular, we are able now to finalize in an orderly manner what will be required to be done under the master plan, also on all the other areas which flow from it, and also the provision of Malikana Haq to those who are living in those unauthorized colonies, increase the pace of registration, the issuance of conveyance deeds and authorization slips, and that we will be able to demonstrate to everyone. Ramesh ji said कि शायद उनको लगा क्योंकि मोदी जी की गारंटी है इसलिए थोड़ी सुस्ती आ गई, पर मुझे पूरा विश्वास है कि डेवलपमेंट नॉर्म्स अभी पब्लिश हो गए हैं पिछले वर्ष, और उसके साथ हम ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे कि जो पीपल हु गो इन फॉर full authorization, they can rebuild and they will also economically benefit. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी. श्री रमेश बिदुड़ी जी. माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है, ये 1739 कॉलोनी जो छोड़ी गई, इसमें कुछ एफुलेंट के नाम से 69+3 कॉलोनी छोड़ी गई थी सर. उनका डेवलपमेंट कुछ अधिकारियों ने जो सर्वे किया होगा सर,
उस सर्वे में फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं आ पाई है। वो भी सेम स्टेटस की कॉलोनियां हैं, या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो एफुलेंट कॉलोनियों को भी तुरंत उनका डेवलपमेंट चार्ज बढ़ा दें सर आप। वो हैं तो उनको डिमोलिश तो कर नहीं सकते। तो उनके बारे में माननीय मंत्री जी की क्या विचार है सर? मेरा सभापति महोदय जी, मुझे लगा कि मैंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वो जरा ज्यादा कंजर्वेटिव वो थे। मैंने ये भी कहा कि जो कॉलोनीज पहली लिस्ट में आ गई थी, हमने ये कभी नहीं कहा कि बाकी कॉलोनीज को हम नहीं टेकअप करेंगे। हमने कहा कि सीक्वेंशियली, क्योंकि इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और हमारे वो बहन भाई रहते हैं जिनको प्रायोरिटी अटेंशन चाहिए, जैसे ये कंप्लीट होगा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि जो 69 है शायद हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जहां रहते हैं, हम उनको भी टेकअप करेंगे। ये सरकार की शुरू से यही पोजीशन रही है, और आपके माध्यम से सर, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आई एम सेइंग दैट दीज विल ऑल्सो बी टेकन अप, और आई होप दिस अश्योर्स माय कॉलीग। आई नो ही हैज बीन लुकिंग टू री-हियर दैट आंसर फ्रॉम मी। मैं कई बार उनसे कह चुका हूं, पब्लिक फोरम में भी बोल चुका हूं। आई हैव नो हेजिटेशन इन रिपीटिंग दैट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सर। थैंक यू। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वे हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वाले के पक्ष में हुआ, हाँ वाले के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इस पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बन गया। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम, सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र के विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने। मंत्री जी, अब प्रस्ताव विधेयक को पारित किया जाए। आई सबमिट दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 30, केंद्रीय माल और सेवा कर। माननीय मंत्री जी। Move that the bill further to amend the Central Goods and Services Tax 2017 be taken into consideration. मंत्री जी कुछ कहेंगे? Sir, thank you for giving me this opportunity. I'll just put the context in which this amendment is coming in. So, as you know, GST subsumed 17 taxes and 13 cesses, and it sort of bridged all the states and enabled trade. The number of taxpayers registered in the GST has almost doubled to 1.4 crores. I'm quoting June 2023 figures. And when it started in 2017, we had only 67.83 lakh taxpayers under the GST. So GST is actually bringing in a lot of advantage to the economy. The tax incidence under the GST has also been lower to what it was before the GST was introduced. So the current features, some of the best features which I can highlight, are that the RBI report itself, while talking about the state finances, as of January 2023, acknowledges that the northeastern states have been the biggest beneficiaries in the GST regime, and they have recorded a compound annual GST revenue growth rate of 27.5 since the implementation of the GST, as against 14.8 for all states.
Almost all the GST Council's decisions have been through consensus. So this being the main feature, the need for the current amendment is something which I'd like to highlight. The section which is 109 of the Central Goods and Services Tax Act 2017, that is the CGST Act, provides for constitution of the GST Appellate Tribunal. The qualifications, the appointments and the terms of conditions for service of the President of the Appellate Tribunal and the judicial and technical members are specified in Act 110, which is the Section 110 of the Act. And under the GST law, sir, the adjudicating orders are passed by the GST officers themselves from the centre and from the state, depending on the jurisdictions allocated. Whilst appeals against the orders passed by the adjudicating officers lie with the first appellate authority, who is an officer within the tax administration itself, belonging to the respective central and the state tax officers. The second appeal against the order of the first appellate authority under the centre as well as the state tax administration lies with the GSTAT, meaning GST Appellate Tribunal. This is the first forum, sir. The Appellate Tribunal is the first forum at which GST litigation process itself converges within the state. That is, appellate orders passed by the centre and the state GST officers become a part of the same appellate forum. So earlier in 2019, sir, the GST Appellate Tribunal benches were notified. We went ahead by notifying the benches, but the same was challenged in the High Courts. In its order dated 20th September 2019, in the writ petition of 2018, in the case of Revenue Bar Association versus the Union of India, Honourable High Court of Madras held as follows, and I quote, "The number of expert members, therefore, cannot exceed the number of the judicial members on the bench," unquote. So the High Court, Madras, struck down the Section 109 and 110 of the CGST Act 2017. In August 2020-21, the tribunals, this is a parallel development which I draw your attention to. In August 2021, the Tribunal Reforms Act 2021 was enacted, by which the qualification and the selection process was standardized for all tribunals. By that time, there was no GST tribunal. But, as I said, it is a parallel development. In August 2021, the Tribunals Reforms Act was enacted, by which the qualification and the selection, the process itself was standardized for various tribunals. Given these developments, in its 47th meeting held on 28 and 29 June 2022 in Chandigarh, the GST Council discussed the changes required in provisions pertaining to the GST Appellate Tribunal in the GST laws, so that it can be brought in conformity with the judgments of the court and in relation to the various aspects concerning all the tribunals. So in that meeting, the Council had decided to constitute a GOM to look into the issues involved, which was constituted on 6th July 2022. The report of the GOM was placed before the GST Council in its 49th meeting dated 18th February 2023, and post-approval of the GST Council, the CGST Act was amended by the Finance Act of 2023, wherein Sections 109 and Section 110 of the said Act was amended. As amended by the Finance Act 2023, the GST Appellate Tribunal shall contain one principal bench and various state benches which are to be notified. The principal bench will be or shall be located in New Delhi and shall have one president
a judicial member, a technical member that is belonging to the centre, and a technical member of the state. The state benches shall have 2 judicial members, a technical member centre, and a technical member state. State benches have also been already notified as of 14 September 2023. The qualifications of the President and members are also clearly notified. Thereafter, it was brought to the notice, and this is the important part of why this amendment is coming through. I've just set the background. The reason why this amendment is coming through is because it was brought to the notice of the Ministry by the Honourable Chief Justice of India in his administrative side through the Registrar of the Court that the following aspects of the service terms were not in consonance with the provisions of the Tribunal Reforms Act of 2021. I'll again try to draw the attention of the honourable members that the GST Appellate Tribunal is developing on its own parallelly to the tribunals, all other tribunals amendment acts which have happened, and now by drawing the attention of the honourable of the Ministry, the Honourable Chief Justice of India, in his administrative capacity, is trying to align the two, and therefore the 2 points on which the Chief Justice of India drew our attention is that the maximum age limit for the post of the President of the Appellate Tribunal and members is 67 and 65 years in the CGST Act, which we had cleared, under the Tribunal Reforms Act 2021. Under the Tribunal Reforms Act 2021, it is 70 and 67. Whereas what we brought in the CGST amendment was 67 and 65. Tribunal Reforms Act had 70 and 67 years respectively. The second point on which amendment became necessary is that the CGST did not have a provision relating to the eligibility of an advocate with a standing of 10 years at the bar for appointment as judicial member, whereas the same is available in the Tribunal Reforms Act, where these two were therefore taken up in the Council and they were approved by the GST Council. Under the Tribunal Reform Act, the advocate with standing of 10 years at the bar is eligible to be appointed in the as a judicial member. So these two particular and specific points which the Honourable Chief Justice of India highlighted, the issue of these two concerns were again placed before the GST Council in its 52nd meeting held on 7th October 2023, and the amendments to the Section 110 of the CGST Act, aligning the provisions with the Tribunal Reforms Act, were approved by the Council. So, accordingly, the CGST Second Amendment Bill, which is what is now before us, has been introduced in the Parliament on 13th December 2023, bringing the provisions of Section 109 and 110 of the CGST Act in line with the provisions of the Tribunal Reforms Act 2021. Sir, once this Honourable House passes this amendment bill, post amendments, the process of selection of the President and the members would be initiated. Honourable Chief Justice of India has already consented to chair the Search-cum-Selection Committee and has nominated Senior Judge Justice Sanjeev Khanna to chair the Search-cum-Selection Committee for selection of members, both judicial and member technical, which is the centre's technical member. So this, therefore, is before us, and I humbly seek the support of all the honourable members to have this passed. Thank you. श्री निशिकांत दुबे जी, आप वरिष्ठ संसद है, आपको भी इस बिल पर बोलने का मौका दिया जाएगा। सभापति महोदय, इस बिल पर अगर बोलना चाहते हैं तो मौका दिया जाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मोदी जी ने
इस देश में 2014 के बाद जितने भी परिवर्तन किए हैं, उस परिवर्तन में सबसे बड़ा परिवर्तन आजादी के बाद ये जीएसटी का था। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सभापति महोदय लगातार इसके ऊपर चर्चा रही कि स्टेट कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा, सेंटर कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा। कुछ अधिकार स्टेट को दिए गए, कुछ अधिकार सेंटर को दिए गए। लेकिन ज्यों-ज्यों इकोनॉमी बढ़ती रही, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ती रही, उसमें लोगों ने यह तय किया कि जो आम आदमी है वो सेंटर और स्टेट के टैक्स से इतना तबाह हो जाता है, टैक्स पर टैक्स इतना हो जाता है कि जब फाइनली वो कंज्यूमर तक कोई प्रोडक्ट जाता है तो उसका दाम इतना बढ़ जाता है जिसमें कि जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, वो उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। 2014 में माननीय मोदी, और जब मैं ये कहता हूं तो कई एक लोगों को लगता है कि 2014 के पहले देश था ही नहीं, 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपको बताऊं, इसका इतिहास यह है सभापति महोदय कि 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो एक केलकर कमेटी बनी थी और केलकर कमेटी ने एक वैल्यू एडेड टैक्स जो है, एक प्रोपोजिशन जो है बढ़ाया था कि अब अपने को इकोनॉमी में ग्रूम करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स की आवश्यकता है। वैल्यू एडेड टैक्स लागू हो गया, हमारी सरकार चली गई 2004 में। और 2006-07 के जिस फाइनेंस बिल की बात कर रही थी निर्मला सीतारामन जी, जिनके नेतृत्व में देश की इकोनॉमी इतनी ग्रो हो रही है कि 2027 उन्होंने टारगेट फिक्स कर रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। 2006-07 में तत्कालीन यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम जीएसटी लाएंगे। 2006-07 से लेकर 2014 तक 8 साल तक इनकी सरकार रही और 8 साल में ये केवल एक तकिया कलाम, जैसे गरीबी हटाओ का नारा 1971 से लगता रहा और जब तक उनकी सरकार रही 2014 तक गरीब खत्म हो गया, लेकिन गरीबी नहीं हट पाई। उसी तरह से उन्होंने जीएसटी के लिए कहा कि जीएसटी लाएंगे, जीएसटी लाएंगे, जीएसटी नहीं लाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, हैसियत नहीं थी, या उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं था राज्यों का कि वो अपने टैक्स को जो है छोड़ने को तैयार हो, या एक फेडरल स्ट्रक्चर में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में किसी तरह का जो है बातचीत हो। लेकिन जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने, अरुण जेटली जी तत्कालीन वित्त मंत्री थे, इन लोगों ने बहुत मेहनत की और मोदी जी का जो नेतृत्व था, इतना मजबूत नेतृत्व था कि राज्यों को उनके ऊपर भरोसा था। क्योंकि गुजरात उस वक्त एक ऐसा राज्य था जो ये कहता था कि जीएसटी का जो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मुख्यमंत्री के नाते जो उनके अनुभव थे, उस अनुभव के आधार पर 2006-07 में ये एक बड़ा टैक्स जीएसटी लेकर आई। इसमें 37 टैक्स हैं सभापति महोदय, 37 ऐसे टैक्स हैं जो टैक्स जो है वो इसमें मर्ज किए गए। अब 37 प्रकार के टैक्स जो राज्य लगाते थे, कुछ टैक्स जो कुछ सेंटर लगाते थे, अब उस तरह के टैक्स नहीं लगते। इसीलिए कंज्यूमर तक जब ये सामान पहुंचता है तो वो कंज्यूमर तक वो सस्ते में पहुंचता है और इसी कारण से हमारी जो जीडीपी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इसमें जो अभी सबसे महत्वपूर्ण दूसरा जो लेजिस्लेशन है जिसके लिए 109 और 110 को अमेंड करने की बात कही है, सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी जो है जीएसटी की बनाई गई है, वो और भी महत्वपूर्ण है सर। इसमें क्या होता था कि जब आप भ्रष्टाचार की सरकार चलाते हैं तो उसमें आप जुडिशियरी को जाने अनजाने प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और सारा अधिकार आप अपने पास रखते हैं, जिसमें कि कैसे आप एडजस्ट करेंगे। तो ट्रिब्यूनल जो है सभी तरह के, आपको मैं बताऊं कि एक समय ऐसा आता है इस देश में कि कम से कम 100-150 ट्रिब्यूनल हो जाते। हमारी सरकार ने 2016-17 में यह तय किया कि इतने ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता नहीं है और पोस्ट रिटायरमेंट हम बेनिफिट जो जजों को देते हैं वो अच्छा नहीं है। इसके अलावा जब हम अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाते हैं तो अलग अलग, जैसे इन्होंने कहा कि किसी ट्रिब्यूनल का है कि 62 साल में ही उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, किसी का 65 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, किसी का 67 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। तो भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया
कि ट्रिब्यूनल जो है वो सभी का बराबर होगा, सभी ट्रिब्यूनल के अधिकार बराबर होंगे, और टोटल मुझे लगता है कि कम से कम 12-14 ऐसे ट्रिब्यूनल हैं जो कि इस सरकार ने एबॉलिश की, जिसकी की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, जिसको कोई काम नहीं था, केवल गाड़ी देना था, घोड़ा देना था, उसको मकान देना था, उसको जो है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देने थे। इस कारण से ट्रिब्यूनल एक्ट में संशोधन हुआ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली भारत सरकार की कई एक बातों को माना। तो इसमें जो दूसरा संशोधन है, जिसके लिए कि अभी बिल आने वाला है माननीय गृह मंत्री जी का, कि किस तरह से सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में चेंज होगा, जिसमें कि लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन जीएसटी चूंकि टैक्स का मामला है और टैक्स का लिटिगेशन इतना बड़ा होता है कि उस टैक्स के लिटिगेशन को लोगों को समझना, उसके पैसे को करना, क्योंकि यदि पैसा भारत सरकार की किटी में भी हो तो उसको टैक्स देना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस कारण से जब एपेलेट अथॉरिटी के बाद, एपेलेट ट्रिब्यूनल के बाद ये केस हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो अनावश्यक जो है देरी हो जाती है और इस देरी के वजह से बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। तो भारत सरकार ने एक बढ़िया काम किया इसके माध्यम से कि एक तो ट्रिब्यूनल को, जो ट्रिब्यूनल एक्ट था उस ट्रिब्यूनल एक्ट में ले आए कि जो सारे ट्रिब्यूनल हैं भारत सरकार के, वो सभी ट्रिब्यूनल में 70 साल और 67 साल का जो एक कैप है वो रहेगा। दूसरा जो सबसे बढ़िया काम किया, जो मैंने आपको कहा कि भारत सरकार ने अपने हाथ में, जो माननीय मंत्री महोदया ने अपने तकरीर में कहा कि हमने जस्टिस संजीव खन्ना जो सीटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो नंबर 2 जज हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनेगी और वो कमेटी तय करेगी कि इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका मेंबर कौन होगा। और इवन स्कोप ज्यादा वाइडर करने के लिए, जज से भी ज्यादा स्कोप वाइडर करने के लिए, जो लड़के बहुत ही तेज तर्रार हैं, पढ़ने में तेज हैं, जिनको टैक्स के बारे में अथॉरिटी है, उनका यदि 10 साल का अनुभव है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो एक बड़ा जो है पुल इन्होंने तैयार किया। तो इसमें एक तो ये होगा कि जजमेंट बहुत आसानी से होगा, दूसरा हाई कोर्ट में जो लिटिगेशन फंसता है वो हाई कोर्ट का लिटिगेशन कम होगा, और तीसरा जो आम कंज्यूमर, अब उदासी जी बता रहे हैं कि 14,000 से ऊपर जो है केसेस हैं, तो ये सारे केसेस को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा फार रीचिंग लेजिस्लेशन लाया है। देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसका जो असर होगा बहुत बड़ा होगा। और जिस तरह से जीएसटी काम कर रही है, 2 चीजों पर, जीएसटी काउंसिल जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और टेक्नोलॉजी जो जीएसटी एंड टेक्नोलॉजी है, और उसके आधार पर जो माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि आज हम जीएसटी लाने के बाद राज्यों को भी कंपनसेट कर रहे हैं, टैक्स भी ज्यादा ला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से एक पुल भी ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, और इस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार बड़ा काम कर रही है। जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, भारत बढ़ रहा है, और मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भारत का नारा है वो कारगर हो रहा है। हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी। Thank you for giving me the opportunity to speak on the important bill, that is the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023. On behalf of Biju Janata Dal, I rise to support the bill. In the last 6 years, the GST ensured compliance simplification with uniform processes across the country. But more needs to be done. I will take this opportunity to highlight some of the concerns. Odisha government, led by visionary leadership of Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji, has already taken simplification measures pertaining to state government. The state cabinet has approved Odisha Goods and Services Tax Amendment Bill 2023 that simplifies the provisions and provide certain facilities to taxpayers and tax authorities in the state. Provision has also been made for GST Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority. Subsequently, Odisha has registered a phenomenal growth rate of 100.77% in the state GST collection in November this year from November last year. Sir, coming back to the issues that I want to raise, full compensation to the state for loss of revenue on account of GST implementation is getting delayed unduly. State revenues have taken drastic fall due to pandemic. I urge upon the government to release the pending GST compensation to the states on time. The
November 2021 notification to increase the goods and service tax GST on several textiles and apparel from 5% to 12% for items with a value slab of above rupees 1,000 is a big blow to the handloom sector. The handloom and craft sector is under severe distress, as the average handloom's household income is only rupees 3,042 per month. I would request through you, sir, for a consideration to the proposal of flat 5% GST on all textile and apparel products. The GST Council has imposed 28% GST tax on full face value of bets placed on online gaming, as opposed to gross gaming revenue. The decision was implemented from 1st October 2023 with a review after 6 months. A consequence of GST Council's decision is need to decide whether the amendment is clarificatory and therefore has a retrospective application, or whether it should be made effective only after 1st October 2023. This is important for estimating past period liabilities. Hence, a clarification is needed. Sir, India needs to simplify its tax system to ease the compliance burden on small and medium businesses. Simplifying tax rates would add to the MSMEs, make imports competitive, and improve exports prospects. GST on kendu leaves has been increased from 5% to 18%. Central tax on kendu leaf was earlier 0. Central government should place this matter in the GST Council and revise the rate to 5%. Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik, on Wednesday announced a special package for the welfare of 8 lakh kendu leaf pluckers and other persons engaged in the trade. Sir, through you, I request the central government to reduce GST on kendu leaves from 18% to 5%. Our Public Account Committee in one of their reports have asked the centre to provide GST exemption for imported pharmaceutical products used by the hospitals and research organizations. The committee observed that the issue of frequent notifications and then repeated clarification is indicative of lack of clarity and coordination. The committee has recommended that tax research units may ensure that notifications includes examples for clarity and court cases. I request that recommendation of committee may be implemented. Sir, in conclusion, it is vital to prioritize areas where immediate reforms are needed. With these words, I conclude. Thank you, sir. श्री धैर्यशील माने जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 इस पर आपने मुझे बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने द्वारा पेश किए गए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 का मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक वस्तु और सेवा कर के अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्माण को सक्षम करने के लिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करता है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन से पहले अपीलनीय प्राधिकरण तंत्र अलग अलग केंद्रीय और राज्य मूल्य वर्धित कर वैट अधिनियमों के तहत मौजूद था। हालांकि जीएसटी की शुरुआत के साथ जीएसटी शासन के तहत आने वाली अपीलों से निपटने के लिए एक समर्पित अपीलनीय प्राधिकरण की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी। अध्यक्ष जी, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 शुरुआत में जीएसटी के गठन के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी बाधाओं के कारण इसके संचालन में देरी हुई। नतीजन अपीलनीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ राहत चाहने वाले करदाताओं के पास सीधे उच्च न्यायालय के संपर्क में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अध्यक्ष जी, जैसे कि विदित है, यह विधेयक मुख्य रूप से केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 109 और 110 में संशोधन करने पर केंद्रित है, ताकि उनमें ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित किया जा सके। अध्यक्ष जी, यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं
सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित करने के लिए विभिन्न तकनीकी और परिणामी परिवर्तन भी करता है। अध्यक्ष जी, प्रस्तावित संशोधन से जीएसटीएटी के कामकाज और समग्र जीएसटी विवाद समाधान तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। जीएसटीटी के संचालन के साथ करदाताओं को समर्पित अपीलीय प्राधिकरण तक पहुंचने के लिए एक संधि प्राप्त होगी, जिससे संभावित रूप से विवादों का तेजी से समाधान हो सकेगा। इससे बदले में कारोबारी माहौल और सुधार होगी और जीएसटी नियमों के अनुपालन में को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटीटी उच्च न्यायालयों पर बोझा कम करने के लिए मदद करेगा, जिससे उन्हें होने वाली जटिल कानूनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में अनुमति मिलेगी। जीएसटीटी में अप्रत्यक्ष विशेष ज्ञान वाले कानूनी पेशेवरों को शामिल करने से निर्णयों की गुणवत्ता में वृद्धि होने और जीएसटी कानूनों के लगातार कार्यान्वयन में सुनिश्चित करने में उम्मीद है। अध्यक्ष जी, जीएसटीटी की सफलता इसके कुशल प्रशासन और मामलों के समय पर निपटान पर निर्भर करेगी। इससे सुचारू संचालन के लिए सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन और बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण रहेगा। अध्यक्ष जी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 लंबे समय से प्रतीक्षित जीएसटीएटी को कार्यान्वित करने के लिए दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस कदम से जीएसटी विवाद समाधान तंत्र में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे करदाताओं और सरकार दोनों को ही लाभ होगा। हालांकि जीएसटी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए कुशल कार्यान्वयन और पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। मैं आदरणीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो अभी नया ढांचा बन रहा है, कानून बन रहा है, उसके माध्यम से करदाताओं को बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन अभी जो प्रलंबित केसेस चल रहे हैं, जो उच्च न्यायालय में अभी पेंडिंग है, उसके लिए सरकार क्या करने वाली है, उसका प्रावधान इसमें कुछ नहीं दिख रहा। निश्चित रूप से उनको भी रिलीफ इसके माध्यम से मिलने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ है, क्योंकि वो आज भी लंबित बहुत समय से बहुत सारे करदाता उच्च न्यायालय में अपना केस लड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, जीएसटीटी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देशों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। कुल मिलाकर केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2023 जीएसटी शासन के विकास में सकारात्मक विकास का प्रतीक है। हालांकि चिंताओं को दूर करना और नई अपीलीय प्रणाली में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। केवल प्रभावी कार्यवाहन ही के माध्यम से ही जीएसटीएटी प्रस्ताव वास्तव में अपनी इच्छित उद्देश्यों को पूरा कर सकता है और अधिक कुशल संज्ञागत जीएसटी प्रशासन में योगदान दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शंकर लालवानी जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने व्यापारियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आज पेश किया है। वैसे 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वन नेशन वन टैक्स का बहुत बड़ा सपना साकार हुआ था। और उस समय 2017 में अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देखें तो सिर्फ 64 लाख था, जो कि आज बढ़कर 1,39 करोड़ रजिस्ट्रेशन जीएसटी में हो गए हैं। इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्यों के प्रतिनिधियों की जीएसटी काउंसिल है, समय समय पर वो संशोधन भी करती है, विचार भी करती है। कभी कभी व्यापारियों के बीच में और जीएसटी के बीच में जो विवाद की स्थिति रहती है तो वो न्यायालय में जाना पड़ता है, और जब न्यायालय में जाना पड़ता है तो उसमें समय भी लगता है, एनर्जी भी लगती है। और न्यायालय में पहले ही बहुत सारे प्रकरण लंबित हैं, लगभग 14,000 प्रकरण हाईकोर्ट में इसके लंबित हैं, और उसी को लेकर अपील के लिए ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है, और इस ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सदस्य की पात्रता, आयु आदि के लिए ये बिल लाया गया है।
इससे व्यापारियों को तो लाभ मिलेगा ही सही, और मोदी सरकार हमेशा व्यापारियों के हित में काम करती है। ये बिल उसके लिए लाया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अनेकों राज्यों में 2-2 ट्रिब्यूनल बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में एक ट्रिब्यूनल बनाई गई है, लेकिन वो भोपाल में है। मेरा मानना है कि इंदौर मध्य प्रदेश की कमर्शियल सिटी और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जीएसटी के इंदौर में है, तो एक ट्रिब्यूनल बेंच इंदौर में भी बनाई जाए, ये मैं मांग करता हूं और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री लाऊ कृष्णा जी। Thank you for allowing me to speak on this, sir. I appreciate the ministry to setting up the appellate tribunal. It's a move in the positive direction, sir. It is very much required when we need justice. We need to have another set of bench where we can actually go and represent our case. So I appreciate it. Really appreciate the ministry for coming up with this. But there's one issue with this, sir, which is with regards to the age limit that has been prescribed for both the president and the members. And there's a provision in the bill wherein retired judges can actually be inducted. So my request from my party side is this should not be a place where, again, the retired judges will actually come and settle in this, sir. So it should not be a retirement home for them. So I hope ministry and the government will take care of this, sir. So coming to the GST, when I'm asked to speak on this, when I inquired with a lot of MSMEs, what is the issues that they're facing with the GST regime? We have done amazingly well. The GST, whatever we're getting from various states, have grown exponentially, and it has been dispersed to the state governments also very well. And it has helped a lot of MSMEs, mostly in the whichever are being moved from offline to online. They've done exceedingly well in the last 6 to 7 years, sir. But there are few issues that needs to be addressed, mainly with respect to the MSMEs that are actually working with the government, sir. Wherein most of the times when I inquired these MSMEs, how are you doing it? They're saying, yes, with the private players, when we are doing transactions with the B2B with the private players, yes, we are fine, wherein one or two issues are there. But when we are doing the business to business with the governments or PSUs, central governments, state governments, that's where the major problem that most of them are facing, sir. With regards to the first problem they expressed was that they're not able to file the returns. When I inquired why you're not able to file the returns, the bill amount and the GST amount, in most of the cases, the PSUs or central government or state governments, even after they execute the contract, even after they do the work also, still they're not able to get these bill amounts and GST amounts. Because of this, they're not able to file the returns, sir. And because they are not able to file these returns, they're not able to pay the GST on time. So what is happening? The government is getting the work done, either central government, state government, PSUs, everyone, they're getting the work done, but instead of paying the vendor, whoever has done the work, they're delaying it. Because the bills are being delayed, he is not able to file the returns. Once he doesn't file the return, there is another provision in this wherein huge, when we delay filing the returns, there's a huge interest of almost 18% that is being laid on these MSMEs, sir. This is the issue that MSMEs has raised with me. This 18% itself, first thing is non-payment by the PSUs. Second is 18% interest that is being asked by the GST laid as a penalty on this, which is itself is very high because this has been there when the service sector regime was there. This 18% was there during the service sector was there. At that time, the PLR, from the banks, what we are getting, what the MSMEs were getting at that time was around 15%, 12% plus 3%. That's around 15%. At that time, you put it around 18%. But now, when you look at the PLR, which the MSMEs are getting from the banks, it's hovering around 10%, which government has done exceedingly well to bring it down. So it's making the MSMEs more competitive across the world. But still the penalty is at 18%. So I request the ministry if the penalty can be reduced, because it is not the doing of these MSMEs, it's the doing of the governments which are not paying them. Because of that, delay is happening. Because of that, huge fines are being levied upon them. So if the ministry can look into it, and if there is a provision of decreasing it, sir, last 1 minute, sir. And also, with regards to when you're doing the business-to-business transactions, the main ask from the MSMEs is that we have issues with the cash flows.
Why they have issues with the cash flows is they have to pay 18% of GST plus 10% TDS, and you return the 10% TDS after 1 year. So on the day he starts business, 20% or 28% is being paid to the government. So he has to wait for 1 year for this to be realized. So if this can be looked into, if the ministry can look into it and can come up with a solution, sir. And also last 2 points, sir. There is we are talking about ease of doing business. Prime Minister is very gung-ho about it, sir. But there is a number of slabs that are there, GST slabs that are there, almost to the number of 8 slabs that are there. When you look at countries like Singapore and other countries which are more progressive, there are only 2 slabs. So if ministry can look into it and bring it down, and also the maximum slab amount that is being levied upon is almost to the tune of 18 to 18%. Sir. So if that max slab amount can be reduced to 12% or 10%, which most of these progressive countries are doing, that would be great, sir. So if these can be, ministry can be looked into it, sir. And if this can be looked at in a positive way, MSMEs, which are employing lakhs and lakhs of people in this country, which we want them to be very competitive across the world, which we want them to export, and which for whom we have come up with PLI schemes and all those things. If everything has to work and MSMEs has to compete across the world, I think these issues need to be sorted out, sir. I hope a positive reply from the ministry, sir. Thank you very much. माननीय मंत्री जी. Let me thank all the honourable members who participated in the discussion. I appreciate that there are overall understanding of what the GST is trying to achieve, and it is the glitches or it is the difficulties which are being faced by many of those who are users of the GST and portal which is being raised, and also the issue of the tax rates. I'll try to address each of the concerns voiced by the members, the primary ones, that is. I thank Member Nishikant Dubey for having given a comprehensive overall picture of where the GST is today and from where it has reached here. Member from Indore, Sri Lalwani ji, of course, expressed his concern that there is one tribunal which is being announced from Bhopal for Madhya Pradesh. Every state is going to get 1+1, and the second one can or maybe will be located in Indore, which is the commercial center, which is of course a decision which is based on the inputs which are given in the GST Council by the state officials as well. I understand his concern on that. There was this point mentioned by Member Sharmishta Sethi, I'm not sure if she's here now, asking for a reduction in the GST rate for Tendu leaves. This topic on the GST rates for Tendu leaves have been discussed, if I remember correct, more than once in the GST Council. And I think since 2017 itself, this has been subject of discussion. In my tenure, twice this has been discussed. And there is no unanimity of view, and therefore we are not able to arrive at a decision which Orissa might like. So the matter on the Kendu leaves lies there. But it is not because the GST Council did not take it up for discussion. It was taken up, but no unanimity has been arrived. Also, Member Sethi also raised this issue of taxation on online gaming with prospective effect, or if there is a need for a clarificatory exercise. The clarification on that levy was issued, sir. 28% is the tax, and as to who it will apply to, on who will the incidence fall, has been clearly explained. But this particular point that the valuation rules, I like to put it on record again, that the valuation rules
to exclude winnings is prospective. So I hope there's no confusion on that. The member from Shiv Sena, Dhairishil Maneji, spoke about the cases which are pending in High Courts and Supreme Court. And now that we are bringing in a legislation with amendments for setting up of the tribunal for appellate tribunal, GST's appellate tribunal. And this particular amendment, of course, is looking at the age limits so that it will be in alignment with the rest of the tribunals. I'd like to inform the honourable member that the taxpayer is at his will, liberty, to withdraw from the High Court, from the Supreme Court, and go to the tribunal which is getting set up, so that his case can be speeded up now that there's a new bench which is established at the states and the appellate which is in Delhi. So it is well within the right of the taxpayer who can take it up further, or withdraw from there and come over to the... Sir, honourable member from Andhra Pradesh has raised quite a few issues on the GST and the fact that there are eight slabs and that the penalty levied on MSMEs and so on. First of all, sir, on rate rationalization, there is a group of ministers which is formed within the GST. It has had a few sittings, but because the chairman of the committee was the chief minister, the former chief minister of Karnataka, and now that there's a change of government in Karnataka, the committee's chairman's name will also have to be re-looked at. The committee is reconstituted and so on. So that work of rate rationalization is a larger exercise which has been undertaken by the GOM. On the issues being faced by MSMEs, the GST Council at the state level and the GST per se at the central level also interacts with various MSME groups. They have had quite a few issues with which the council's teams have sat through and also addressed their issues. So this issue of PSUs not paying the MSMEs, and as a result they themselves will have to pay the tax on an amount which is not received, has been, I think, to a large extent about the central PSUs have been addressed. I personally involved myself in saying the PSUs cannot delay payment beyond 45 days. It was mentioned during one of my budget speech, after which we followed it up with the PSUs. And once when there was a fairly unbelievable number floating around in the public domain about the total amount which is pending from PSUs for MSMEs, I was perturbed. I went back to check it up. This understanding that PSU means central may not always be correct, sir. Yes, there are PSUs, central PSUs, which owe money to the MSME, and all of us ministers have been very keenly observing them that the delay should not be beyond 45 days, and the central PSUs largely now go by that understanding. But however, I don't have an authority to speak about state PSUs. And it is not a secret that state PSUs who owe a large amount to the MSMEs. And the problem therefore remains for the MSMEs, but it is outside of my realm. It is very much the realm of the states, where the same concern for MSME should be understood by the state governments, and they should quickly clear the bills. I would like to inform the member that this budget, which was read out on the 1st February 2023, we made it a point to say that large companies cannot benefit from claiming those fiscal incentives and other incentives which are given to them without paying the dues to the MSMEs, as they would normally show it as an expenditure, that expenditure which is going as payments to the MSME, and as a result, that expenditure should not be taxed, is the common sense understanding. But you have not paid them.
And without paying them, if any company shows it as an expenditure, they cannot draw the claims for having spent that money when actually you have not spent it. You have not paid the MSMEs. So we brought that change in this particular budget so that these advantages which accrue to the larger companies without actually paying the smaller companies should not accrue till actually they make the payment, whichever fiscal year it may be. So we have been fairly sensitive to the needs of the MSMEs. I am quite happy to hear more about it, and when I was recently in Vijayawada, Honourable Member met me with a delegation and gave me also a lot of representations. We'll take that on board. So that being my reply to all those Honourable Members who spoke about it, I am very grateful, sir, and I seek the House and its cooperation to pass this amendment. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इस पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इस विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 31 अनिंतर कर संग्रह विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to provide for the immediate effect of for a limited period of provisions in bills relating to the imposition or increase of duties of customs or excise be taken into consideration. So thank you, sir. I'll briefly highlight the need for a bill of this nature. So Article 265 of the Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by the authority of law. What this bill seeks to obtain is this authority from the Parliament to provisionally levy and collect the newly imposed or increased duty of the customs and excise for 75 days. I'll briefly give you the background, sir. The Provisional Collection of Taxes Bill 2023, that which is before us, proposes to replace the erstwhile Provisional Collection of Taxes Act 1931 with just minor changes, which is technical in nature. So this law is in existence from 1931. We have just made minor changes, and we are here, therefore, not with a new law, but with a mildly amended existing law. The provisions of the bill empowers collection provisionally. I underline the word provisionally. During the period between the introduction and the enactment of the bill, the increased customs or central excise duty, where such duty rate is increased beyond the statutory rate approved by the Parliament, or where such duty is newly imposed. So if we are bringing in something and that which has to be implemented from a particular date, this Provisional Collection of Taxes Bill, which exists from 1931, is the one which gets invoked. This bill confines this interim period
to 75 days, and where the bill is not enacted within 75 days or is enacted with amendments, the provisionally collected taxes are to be refunded. So I would like to make it very clear, sir, that the amendments to this or rates increased by the invocation of this particular provisional collection of taxes bill 1931 is valid only up to 75 days, within which I need to make it sure that it gets approval of the Parliament. If it doesn't get the approval of the Parliament, then the amount collected will have to be refunded. I already said that Article 265 gives us the Constitution of the Constitution, provides that no tax can be levied or collected except by authority of law. So if I don't have a law within 75 days, the amount collected becomes not valid and therefore it has to be repaid. So the provision is required for reasons. Why do we at all then need to collect it temporarily? Why do you want to provisionally collect it and run the risk that if you don't pass the bill, you will have to pay the refund back? Why do we want to do it? This provision is required, sir, for reasons such as to provide tariff protection to domestic industry on immediate basis. So sometimes you will have to bring it immediately and not wait for the 75 days or not wait for the session to conclude, pass the bill and so on. So you want immediate relief to be given, moderate domestic prices. When the prices are going up, you need to moderate it, avoid speculation in the market, and also for revenue considerations. So in the case of income tax, this is not required, sir. It is only required for this indirect taxes. In the case of income tax, changes are made in the finance bill for the next financial year. So 1st February, I might bring in the budget, I announce it, but it gets effective only from 1st April. So for the next financial year is when changes are made. And therefore, the power to collect tax provisionally is not required for income tax. In the case of GST, all the rate changes are first of all carried out only based on recommendations of the GST Council. So it gets decided in the Council and then it comes here for the central government to pass it as a part of either finance bill or otherwise. So the recommendations of the GST Council and the effective date of rate of change is also decided by the Council, and then it is synchronized between the centre and the states. So that's the case for the GST. Hence, the power to collect tax provisionally is not required for the GST. It is only, therefore, for these customs and excise duties that we need it. So I appeal to the House that this temporary provision, which gives me the provisional power to collect taxes, and then subject to the House passing the bill, continue with it. Or if it doesn't within the 75 days, I can pay back, helps me to stabilize the prices in the market, helps me to make sure there are no speculation in the market, and above all, when I want to have immediate impact to protect the domestic industry. Thank you, sir. श्री जयंत सिन्हा जी। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपको और मेरे पार्टी को आभार कि आप लोगों ने इस रीजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल के बोलने के लिए आपने एक अवसर दिया है। और मैं इस बिल के द्वारा 2-3 मुख्य बातें हैं जो है मैं आपके ध्यान में आपका आकर्षित कराना चाहूंगा। और वो पहली बात तो ये है कि हम लोगों की आज जो अर्थव्यवस्था है, वो जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो मेजर इकोनॉमीज हैं, उन सब में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज 7% से ज्यादा तेजी से हम लोगों की अर्थव्यवस्था रफ्तार से बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आश्वासन दिया है कि अगर विश्व में हम लोग 5वें स्तर पे हैं, तो अगले कार्यकाल में, माननीय प्रधानमंत्री जी के अगले कार्यकाल में 5वें स्तर से हम लोग 3रे स्तर पे हम लोग आ जाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी की ये गारंटी है। और वो गारंटी हम लोग इस विश्वास के साथ क्यों दे सकते हैं? इसलिए दे सकते हैं क्योंकि जो अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर सुधार के ठोस कदम हम लोगों को लेने हैं, ये ठोस कदम हम लोग निरंतर लेते चले जा रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हो, आयुष्मान भारत हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो,
इन सब में हम लोगों ने बड़े बड़े ठोस कदम लिए हैं, प्रभावशाली कदम लिए हैं। और आज जो हम लोग सदन में चर्चाएं कर रहे हैं, पहले जीएसटी बिल पे और अब प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के बिल पे, माननीय सभापति महोदय, इनके द्वारा जो हम लोगों को स्ट्रीमलाइनिंग करनी है, जो हम लोगों को रैशनलाइजेशन करना है, जो हम लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, वो हम लोग दर्शा रहे हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है। और जब हम लोग इस तरीके से निरंतर करते रहेंगे, सुधार लाते रहेंगे, तो अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी और हम लोगों की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पे चली जाएगी। तो ये आप इन दोनों बिल के द्वारा ये आपको समझना जरूरी है, सब माननीय सांसदों को समझना जरूरी है कि ये काम जो है ये डायनामिकली चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और इसका प्रभाव देखिए, हम लोगों ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अभी तो जीएसटी की बात हुई, अब हम लोग कस्टम्स और एक्साइज की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस में सुधार हम लोग लाए हैं, जिसके द्वारा इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसका इतना बड़ा प्रभाव हमारी इकोनॉमी में हुआ है। मैं कुछ आंकड़ों के द्वारा, ये दूसरी मुख्य बात है, जो कुछ आंकड़ों के द्वारा फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अभी बात हुई कि जहां 44 लाख करीब लोग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस भर रहे थे, अब वो संख्या 1,40 करोड़ लोगों की हो गई, 1.4 करोड़ लोगों की हो गई है। कलेक्शंस का इंक्रीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 1,86,000 लोगों का कलेक्शन होने लग गया है जीएसटी के द्वारा। आप देखें कि टैक्स पेयर्स कितने हो गए हैं, वो भी उसमें दोगुना हो गया, जहां 3.79 करोड़ टैक्स पेयर थे, अब 7.78 करोड़ टैक्स पेयर्स हो गए। फास्ट टैग के द्वारा जहां एक ट्रक 300 किलोमीटर चलती थी, अब वो 600 किलोमीटर चल रही। ईपीएफओ में जहां 11.8 करोड़ लोग थे, आज के समय करीब 28 करोड़ लोग हो गए हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो चल रही है, उससे बहुत सुधार इकोनॉमी में आ रही है, हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख है कि अभी भी इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉर्मलाइजेशन में विश्वास नहीं करते हैं। और मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे झारखंड में ही बड़ी दुखद एक अभी छापा के बाद एक घटना निकल के आई है, जहां शराब व्यापार में लिप्त एक राज्यसभा के सांसद के घर में 350 करोड़ से ज्यादा कैश वहां मिले हैं। जहां हम लोग, एक और भारतीय जनता पार्टी के हर कोई सदस्य की ये प्रयास इनका हम लोगों का रहा है कि इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो, इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन बढ़े, देश में सुधार आए। वैसे ही हमारे विपक्ष की ओर अगर आप देखें तो वो कैश का इनका व्यापार चलता चला जा रहा है और बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रहा है, और अभी भी ये लोग टैक्स के दायरे में आने को तैयार नहीं है। और इनका जो लूट है, खासकर झारखंड में इनका जो लूट है, वो निरंतर चलते चले जा रहा है। और जहां ईडी, सीबीआई, आईटी की छापामारी चलती चली जा रही है, और वहां एक नहीं अनेकों ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं, जिनमें से अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, और एक बहुत बड़े नेता हैं जिनको बुलाया गया है 6 बार। ईडी ने उनको 6 बार बुलाया है। लेकिन दुखद बात है कि इन लोगों का लूट जो है, इनका इनफॉर्मल इकोनॉमी में कैश में जो इन लोगों का कारोबार चल रहा है, उससे बचने के लिए ईडी ने उनको बुलाया भी है, लेकिन वो अभी भी वहां आए नहीं है। ही हैज नॉट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ईडी। तो सभापति महोदय, इसी तरीके से हम लोगों का प्रयास है कि कस्टम्स और एक्साइज में भी, जैसे अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया है कि अगर हम लोगों को डायनामिकली एडजस्टमेंट्स करने पड़े, अगर हम लोगों को प्रोविजनल टैक्स कलेक्शन करना पड़े, तो सरकार के पास वो अधिकार होना चाहिए ऑन अ प्रोविजनल बेसिस फॉर अप टू 75 डेज टू एडजस्ट टू डायनामिक कंडीशंस। चाहे डंपिंग हो जाए कहीं, या कहीं बहुत तेजी से भाव हैं वो बढ़ रहे हों, तो उसके लिए राहत हम दे सकें। तो ये जो है, ये पावर्स हम लोगों को सरकार को देने चाहिए, और इस प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के द्वारा ये हम लोग पावर्स जो है सरकार को दे रहे हैं। और इस तरीके से जो लोग कैश का कारोबार कर रहे हैं, जो अभी भी अवैध अपना कारोबार कर रहे हैं, उन पे हम लोगों को रोक लगाना चाहिए, उन लोगों को हम लोगों को छापा मार के रोकना चाहिए। आप करेंगे तो झारखंड में बहुत सारे और लोग निकल के आएंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यही गुजारिश करूंगा कि ईडी के द्वारा, आईटी के द्वारा और भी छापामारी हो, कि जहां कोयले का, भू माफिया का, शराब का, बालू का, इस प्रकार का अवैध कारोबार चल रहा है, काले करतूत चल रहे हैं, इन पे आप छापामारी करिए। जो अभी कैश में बिजनेस चल रहा है, उसको आप टैक्स के दायरे में लाइए, हम साहब को राहत दिलवाइए, जिसमें कि हम लोग एक विकसित भारत बना सकें।
और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जल्द से जल्द सबको हर सुविधा मिले, एक विकसित भारत का निर्माण हो। इस प्रकार से जैसे अभी जीएसटी के बिल में हम लोग अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी में हम लोग अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, हम लोगों के प्रयास से तो ये होता ही रहेगा। मैं विपक्ष के साथियों को भी यही विनती करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि सब अवैध कारोबार आप छोड़िए, टैक्स के दायरे में आइए, चलिए मिलजुल कर हम लोग एक विकसित भारत बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती बीवी सत्यवती जी। I stand here to support the bill from YSR Congress Party on Provisional Collection of Taxes Bill 2023. So, before I support, I would like to take this opportunity to talk about some of the ongoing issues faced regarding taxation and the collection of taxes and provide some suggestions regarding the same. Honorable Chairperson, Madam, the first point is remarkable surge in centers' tax revenue collection and the need for its strategic allocation. So I would like to highlight that in 2022, the central government has observed an extraordinary 303% surge in tax revenue over the past 12 years, escalating from rupees 6.2 lakh crores in financial year 2010 to rupees 25.2 crores in the financial year 2022. And the second point is high tax burden on middle class. So in the current context, the middle class population in our country would welcome a reduction in the taxation burden. So presently, the rich constitute a small proportion and the majority of India's population remains tax exempt, leaving the middle income group with a substantial tax burden and limited returns. Chairperson, Madam, and the third one from our YSR Congress Party, enhancing the Public Provident Fund. So the unchanging interest rate of the Public Provident Fund, PPF, demands immediate attention, having remained at 7.1% since April 2020, falling short of the 7.9% recommended by the Reserve Bank of India, RBI. Madam, another point, expanding the tax base for inclusive growth. So the increase in population has led to a growth in the workforce. However, the income tax base has not seen a corresponding expansion, necessitating attention. While the absolute number of income tax return filers in India has risen, closer examination of the data from the Ministry of Finance in Lok Sabha for financial year 2023 reveals a comparatively low number of individuals who have actually paid income tax, especially when compared to the figures from financial year 2020. And to achieve this inclusive growth, the government should consider reducing tax rates by broadening the tax net, a scenario where a large population files income tax returns and contributes to income tax